average number of players who scored more than 20 runs in all the 3 tournament is। तो हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि जिन भी प्लेयर्स ने 20 से ज्यादा रन स्कोर किए हैं इन ऑल द 3 टूर्नामेंट्स उनका एवरेज क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स है जिन्होंने 20 से ज्यादा रन स्कोर किया है। विद सो दिस इज गोना बी द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर आवर एवरेज। सो we will calculate the total number of players who scored more than 20 runs in all the 3 tournaments। तो अगर यहाँ पर हमारा बेस डिफरेंट होता तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल वैल्यूज कैलकुलेट करते, बट एज हमारा बेस सेम है विच इज 300, तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज वैल्यूज को ऐड कर देंगे एंड देन हम 300 का वो परसेंटेज निकाल लेंगे। सो 80 प्लस 60 प्लस 70 विल बी 210%। So now first we will calculate 210% of 300, which will be the sum of observation, and then we will divide it by 3, which is number of observation। So 3 कहाँ से आया? So these are the 3 tournaments जिन पे हम average calculate कर रहे हैं। So 3 will be the number of observation। So first we will find out 210% of 300। So 210% of 300 will be 630। So this is sum of observation upon 3, which is number of observation। So this is gonna be 210। So this is our average। So this is in option D, hence option D is our correct answer for this question।